Okay, great. Thanks. So, are we able to see the question as well? Okay. Can we also see the question on screen? Yes. So you must be getting the question. Do you think YouTube can support in child learning? You have to select one option. Great. Is everyone done responding to the question? Go back to the code option दिखा रहा है. Oh, go back to the code. People are asking for the code. बोल सकते हैं उसको. अच्छा आगे. It's 79902276. आई होप आप कर पा रहे होंगे एक्सेस सब लोग. ठीक है. क्वेश्चन क्या हम वापस रिस्पॉन्स देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी टाइप किया है. ग्रेट. So thank you everyone for registering your responses on the Mentimeter. तो यहाँ पे हमें कुछ responses मिल गए हैं और हम देख पा रहे हैं कि more or less everyone is believing and responding कि टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है बच्चों की लर्निंग्स को लेके. सो इन्हीं रिस्पॉन्सेस को मैं बेसिस बनाते हुए अपने नेक्स्ट पैनल के बारे में बताना चाहूंगी. पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के रूप में उभर के आया है, जिससे माता पिता अपने बच्चों की सीखने की जर्नी में एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला पा रहे हैं. Technology offers a plethora of tools and opportunities that could lead to an abundance of information and methods for parents to support their children. इसी थॉट के आज के दिन के पहले पैनल जो है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैं इस पैनल की शुरुआत करना चाहूंगी और आज के अपने पैनलिस्ट को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और उनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमारे साथ समय निकाल कर आज जुड़ रहे हैं. पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इस पैनल में हम अपने पैनलिस्ट से सुन रहे होंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर रहा है पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने में, बच्चों के विकास को लेकर इस प्रोसेस में किस तरह के चैलेंजेस डेवलपर्स और पेरेंट्स जो कि हमारे यूजर्स हैं वो फेस कर रहे हैं, और साथ ही फ्यूचर लेंस से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हुए पेरेंट एंगेजमेंट को बढ़ाने को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस और प्लान्स जो इस फील्ड में अपना फोकस्ड कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. I would like to welcome and introduce our panelists, Mr. Brijesh, who would also be the moderator of this panel. Welcome, sir. Mr. Brijesh is the co-founder and director at IndiaMart, which is India's largest B2B market. IndiaMart has stood the test of times to emerge as one of the few profitable and publicly listed internet businesses in India. ब्रजेश जी फॉर्च्यून इंडिया में 40 अंडर 40 लिस्ट में फीचर किए जा चुके हैं. एक एंटरप्रेन्योर होने के अलावा वो शिक्षा में करने को लेकर काफी रुचि रखते हैं. वह प्लाक्षर यूनिवर्सिटी के फाउंडर और ट्रस्टीज में से भी एक हैं. थैंक यू ब्रजेश जी फॉर जॉइनिंग अस. प्लीज हैव अ सीट. हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं मिस्टर भरत बेविनाहली. Mr. Bharat is one of the founders and CEO of Kutuki. At Kutuki, over the past 4 years, his team has married art, technology, and pedagogy to create a comprehensive early learning platform tailored to address foundational learning for Indian children
and their work has impacted over 5 million children across 2,500 locations in India. Mr. Bharat was a recipient of the ISB Torchbearers Award. He has previously worked in consulting in general management and IT services and media and entertainment. Interesting fact about Bharat that he is also a trained Carnatic classical musician, guitarist, and music composer. That's amazing, sir. Please have a seat. अब मैं अपनी तीसरी पैनलिस्ट दर्शना जी को इनवाइट करना चाहूंगी। दर्शना जी साझा के साथ पिछले 7 सालों से जुड़ी हैं। इस समय वह एज अ साझेदार पेरेंट को सपोर्ट कर रही हैं। दर्शना जी पहले एक एसएमसी मेंबर भी रह चुकी हैं और उन्होंने एक प्री स्कूल का भी शुरुआत की थी। सो अमेजिंग, कुडोज टू दर्शना जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वी हैव दीपिका Mogli Shetty joining us as one of the panelists. She will be joining online with us. Hi, I'm here online. Hello, Deepika ma'am. Hi, thank you for inviting me. Looking forward to this panel. Can you hear me? I would like to introduce Deepika ji. Ms. Deepika is a chief for policy and partnerships in Ek Step Foundation. She is a lawyer and completed her graduation from National Law School of India University, Bangalore. She is driven by enabling access to rights by leveraging policy, technology, and understanding mindsets. इनके पास 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है on the issues at intersection of policy, technology, and access and societal change. एक बड़े स्केल पर जो सोसाइटल चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि खास कर इक्विटी के बारे में हैं, उनको एड्रेस करते हुए आइडेंटिटी एंड एजुकेशन जैसे एरियाज में काम कर रही हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए a big thank you and a very warm welcome once again. I am now handing over to Brijesh ji to take over the panel discussion ahead. थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मैं दीपिका का, दर्शना जी का, भरत का, सब उनका भी बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग आए यहाँ पे और इस डिस्कशन के दौरान जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आई एम श्योर वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जो ऑडियंसेस हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। In case anybody has a language problem, then I can speak in English in the both. Works for you, Bharat? Acha, it's absolutely fine. Deepika, does it work for you? It works. Go ahead. I may respond in English, but it'll be okay. I'll understand. Okay. It'll be fine. तो सबसे पहले तो दर्शना जी आपसे ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप एक मदर हैं, आपने अपने बच्चे को भी इस जर्नी में देखा है कि किस तरीके से जब स्कूलिंग हो रही है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया या बगैर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए कैसे पढ़ाई करी। तो एक पहला सवाल ये है कि इस पूरी जर्नी में आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें दिखाई दी जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से फर्क पड़ा आपके बच्चे के लर्निंग के ऊपर? नीचे होगा। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? पहले तो सभी को नमस्ते बोलूंगी। तो टेक्नोलॉजी के लेकर जो मैंने देखा है अभी बच्चे की पढ़ाई में, तो शुरुआत तो होती है लॉकडाउन से। तो लॉकडाउन के दौरान नहीं पता था कि इस तरह भी पढ़ाई होती है। इतना ज़्यादा नहीं पता था, थोड़ा बहुत, मगर इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो मेरे बच्चे पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लास हो रही थी, चल रही थी। तो उसी समय मैं घर का ही कुछ काम कर रही थी और घर का काम करते करते मैंने देखा कि उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं भी वहीं पर खड़ी हो गई
और वो कुछ सवाल पूछ रहे थे बच्चे से, और मुझे पता था कि ये कुछ बोलना चाहता है, मेरा बड़ा बेटा कुछ बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं रहा है, उसे उसका आंसर पता था जो वो पूछ रहे थे। लेकिन मैं मतलब मेरे को समझ आ रहा था वो किस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी रहे थे सामने टीचर, और पर मेरा बेटा नहीं बोल पा रहा था। मुझे पहली बार पता चला कि उसे पता है सारी चीजें और फिर भी नहीं बोल रहा है। और फिर मैंने उसको बोला, मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, कह रही बोला कि नहीं नहीं मम्मी मत करो मत करो। फिर मैंने बोला कि तू चुप रह, मैं बात करती हूँ सर से। मैंने माइक ऑन किया और फिर मैंने उनको बोला कि अनुराग कुछ बोलना चाहता है आपसे, आपसे जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका सब जवाब देना चाहता है। और फिर उसने जवाब दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा घबराते घबराते, जैसे मेरी अभी आवाज निकल रही है घबराते घबराते, तो ऐसे ही कुछ आवाज निकल रही थी उसकी। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसने बोल दिया। फिर लेकिन मैंने बाद में ना टीचर से बात की, और उनको मतलब घर पे भी बुलाया, मैंने उनसे बात की कि सर मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब उसे पता काफी चीजें हैं लेकिन वो बोलने में बहुत शर्माता है। उसे मतलब बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने इसको भी शांत शांत देखा है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर वहां पर उस टाइम पर अगर मैं नहीं देखती कि मेरा बेटा बोल नहीं पा रहा है, किस कारण से वो थोड़ा पीछे चल रहा है, वो मुझे वहां पर समझ आया। और ऐसे ही दूसरे बेटे की भी ऑनलाइन चल रही थी पढ़ाई, तो वहां पर मैंने देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है लेकिन बच्चे सब आए हुए हैं लेकिन टीचर गायब है वहां से। मैं वहां बैठी ही रही, मैंने कहा अब आएंगे टीचर अब आएंगे टीचर, पर वो नहीं आए। फिर जब टाइम खत्म हो गया ऑनलाइन क्लास का तब वो आए। फिर सारे बच्चे चले गए। फिर मैंने माइक ऑन करके बोला कि सर मुझे आपसे बात करनी है। तो उनसे मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप ऑनलाइन क्लास थी आप कहाँ थे, बच्चे तो सब यहीं थे। कि नहीं और बच्चे नहीं थे। मैंने कहा सारे बच्चे थे, जो थे उनको तो पढ़ाते ना आप तो थे ही नहीं, मुझे दिखे ही नहीं। कि हाँ मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, या मैंने कहा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो और बच्चों की एक ही फोन है ज्यादातर लोगों के पास, और बच्चे 3-3 4-4 हैं, और सभी की ऑनलाइन क्लास होती है, टाइमिंग का भी बहुत इशू है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप बोल देते, तो उस दिन से वो टीचर भी थोड़ा उस चीज को समझ पाए। तो यहाँ पर मुझे एक तो ये बहुत अच्छा लगा कि मैं देख पा रही थी कि बच्चे की क्लास में हो क्या रहा है, मेरा बच्चा किस वजह से पीछे चल रहा है और कहाँ पर कमी हो रही है। तो वो मुझे समझ आई और मैंने टीचर से बात की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं भी टीचर से बात कर पाई समझते हुए। नहीं तो पता है क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि टीचर ने आज ये किया वो किया, तो नहीं समझ आता है। मुझे समझ आ रहा था टीचर इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। और दूसरी जगह और बहुत सारी चीजें ये भी हो रही होती हैं कि बच्चे बोलते हैं कि आज हमने सब कुछ किया, लेकिन वहां मैं देख पा रही थी कि टीचर ही नहीं है। और जो कारण था वो भी उनका समझ में आया, लेकिन ये भी समझ में आया कि वो अगर बोलते कि आज छुट्टी है तो शायद उनका टाइम भी बचता और उनका बच्चों का टाइम भी बचता। तो इसमें दर्शना जी जैसे एक फायदा जो टेक्नोलॉजी का आपको मिला वो ये था कि आप ये देख पा रही थी कि आपका बच्चा क्या कर पा रहा है क्लास में, क्या नहीं कर पा रहा है, या अगर टीचर प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, आपको एक तरीके से उसको मॉनिटरिंग करने का एक सिस्टम मिल गया। ये फायदा आपको तो हुआ। जी जी। अनुराग को क्या फायदा हुआ या आपके दूसरे बेटे को क्या फायदा हुआ? कोई ऐसी चीज जो रेगुलर क्लास जब वो जाते थे स्कूल में तब नहीं हो पा रही थी और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी तो हुई? तो मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा बोल नहीं पा रहा है। सभी बच्चे घर में बहुत बोलते हैं, लेकिन बाहर जाकर जब स्कूल में शायद वो नहीं बोलते, पता नहीं कुछ महसूस होता है। मेरे को भी होता था जब मैं स्कूल में थी। तो मुझे वहां से समझ आया कि मुझे बात करने की जरूरत है मेरे बच्चे से, और मुझे बात करने की जरूरत है टीचर से। उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है और क्या कमी है, ताकि वो टीचर उसको पूरा कर पाए। और मैं भी वहां पर समझ पा रही थी कि मुझे मेरे बच्चे को कैसे बात करनी है, क्या बोलना है। तो ये चीजें मुझे समझ में आ रही थी। लेकिन जब
स्कूल में नहीं पता चल पा रही थी। जब से ऑनलाइन क्लास हुई तब से मुझे काफी चीजें समझ आई कि टीचर से बात करना कितना जरूरी है, बच्चे की जो भी चीजें हैं, कमी है या उसमें क्या क्वालिटी है, उसके बारे में। Understood. Bharat, I'll come to you. You have a full-fledged experience of building up a product, working with kids directly. What, in your opinion, have been some of the areas where it really has impacted the learnings of kids overall? So in our experience, I'll specifically talk about early learning because that's what we do. Everything that we've built at Kutuki has had one thing that has never changed. It's always been a constant. That is the learning outcomes that we wish to achieve and how a child is sort of achieving them. And from the outset, the goal for us has been to create art content that reflects the way Indian children look, talk in languages that are familiar to them, and combining that with clear learning outcomes that they can either watch a video in the form of a lesson and then be assessed with fun games without it ever feeling like it's a school-like experience or an experience where they're sort of bogged down, right? Now, having said that, I think given that, we're talking about parental involvement, the key challenge for us right from the outset has been children love the content. They're consuming a lot of it. But how are we able to convey that to parents? How are we able to show that this was the baseline where your child started on the Kutuki app and this is where they are? And this was a problem that we wanted to solve even before we launched the product. So from the outset, we have had something where data has been a really strong focus for us. We do a lot of internal measurements, and making that available to parents, I think, is critical. Now, just like Darshana ji was talking about how she was aware of what was happening. In our case, we don't do online classes per se, although we did do that during COVID. Providing a means for parents to even understand what foundational literacy and numeracy is in many cases is a challenge, right? If you're talking about upper middle class families, parents are educated, there is a base level of understanding that they already have. But the further you go into India 2, the further you go into India 3, it becomes more and more apparent that you also need to educate the parents in some way about what they need to be guiding their children with. Not necessarily training them to be FLN practitioners themselves, but being able partners in the journey, right? And to that end, I think our experience still remains very child-centric because that's the main focus for us. Everything that we do, whether as content creators, we're trying to enable a better learning experience through better content. As product developers, we're trying to develop experiences that are very simple for a child to use. And at the same time, we understand that it cannot be done in isolation. It has to be done in combination with parents. We have to make parents a part of the whole experience from the outset. So today, from the time we start our onboarding, what was interesting for me as I was walking around the slots, everyone has understood that the only channel that works for communication is WhatsApp. Nothing else works. So in our case, the way we think about it is everything that we build for the child is on our app, on mobile apps, web apps, whatever apps we do. And everything that we build for parents and teachers is done outside of the app through WhatsApp. Okay. So, but the one thing that I understand is that you see technology has enabled you to actually connect with the parents apart from just the kids, which generally would not happen in a typical school, because in a school, parents' involvement would be only limited to a parent-teachers meeting once in a quarter, and nothing beyond that. Oh, absolutely. We're a B2C app, right? So the parent is always the person who the first touch point is with. So that's absolutely paramount. Correct, because अगर हम लोग अपने घरों में देखते हैं, हालांकि हमारे तो बच्चे बड़े हो गए यहाँ पे, लेकिन जो चूंकि बड़ा परिवार है वहाँ पे अभी छोटे बच्चे होते हैं, एक बहुत कॉमन चीज देखी है, ये YouTube के वीडियोस हम लोग तो सब मना करते रहते हैं कि मत देखो, सारा टाइम फोन करते रहो, लेकिन एक फायदा उस बात का जरूर हुआ है कि खास करके एक तो इंग्लिश सिखानी नहीं पड़ती है, ये बच्चे बहुत तेजी से सीख जाते हैं. This has been one common experience. In fact, जो उनकी वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी ऐसी होती है कि हम लोग भी कभी कभी डिक्शनरी खोल करके बैठ जाते हैं कि अच्छा ये कहाँ से मिला.
अब वो चाहे शिनचैन से सीख करके आए हों, चाहे डोरेमोन से सीख करके आए हों, लेकिन जो चीज माँ बाप मतलब हफ्तों से लगे हुए थे सिखाने के पीछे, वो मतलब 2 घंटे के यूट्यूब वीडियो जरूर सिखा देता है उनको। तो ये एक चीज बड़ी कॉमन अपने मतलब एक्सपीरियंसेस में देखिए कि जो भी कंटेंट बना है, चाहे कार्टून्स हैं, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आइडिया तो बच्चों के दिमाग में बहुत तेजी से जाता है अगर उनको पसंद आता है वो सारा का सारा। बट just related to this, and Deepika, I'll come to you on this. It also poses a lot of, let's say, unwarranted exposure of kids to content which may not be suitable. So that's the other side of technology, where it might also lead to kids having access to information which you may not necessarily want them to have. And you've been on the policy side. How do you think about technology working for these kids, and where do you see that it aids, and where is it that it typically can have a negative impact? Thank you for that question, and sort of want to connect it to the 2 points both Darshanaji and Bharat raised. For me, I've seen technology has unlocked avenues for learning across the board, for the parent and for the child. So how we as adults are learning today is because of access, and that kind of spills off in the way that our children are learning as well. And of course, for this entire education ecosystem, I think a parent became front and center and suddenly a big area of focus because COVID enabled that, right? It unlocked our minds. We are no longer debating the role of technology in the learning process because we are all seeing it. Having said that, 2 things. To your specific question, yes, there is good and bad of technology all around, right? The idea of creating curated spaces, walled gardens, and more than anything else, how can you create spaces across age groups where the role of the parent in this journey becomes an important thing for us to unlock and understand. In the early years, the way that Bharat was talking about it, the parent is co-walking the journey with the child in some way, right? The parent is learning how to engage with the child and doing things with the child. Is there a space for engagement? And we've seen that in a lot of interactions and initiatives across the ecosystem, whether it's Kutuki's own apps and engagements, both with parents and learners, but also with WhatsApp-based messaging programs that either Rocket Learning or Pratham or Key Education Foundation, Saja, several others are doing across the ecosystem. Or IVRS messages. So when where bite-sized 90-second messages that those is sending out to parents to educate parents on what they can do with their children. So here, I think we have to look at what I'm urging is for us to think of the idea of technology on the broad spectrum on what it is. It's not just digital technology. Think of it from, you brought up the idea of Doraemon and Shinjin, which is basically TV in some form, or YouTube. And at the same time, we've talked about apps, and there's IVRS. So technology plays across the spectrum in the way parents engage and learn and develop their own learning. But I want to talk about the one question that you asked, what was it for the child? And this is something we perhaps need to delve into a little bit more in terms of the role of technology, with the good and the bad and all of that. But can technology unlock and enable and take away the challenges that the child faces in a real world classroom? Fear of speaking. Can we create a safe space for learning? Right? Fear of speaking is a very common thing we experience. You're not putting up your hand because you're afraid you could be wrong. But if there is a way that you could know that you were right, or that you could learn on your own a little bit, and to create that safe space for learning when you have difficulty, especially with older children, technology will enable that, can enable that. So I actually look at the boons of technology from the perspective of not that it replicates the existing learning experience,
when it creates a safer, more empowering learning experience for the learner. At least in certain pockets, not in its entire journey. And as far as the good and the bad is concerned, that goes with all of it. Too much of everything is not really good for anybody. Too much of sugar is not good for you. Too much of anything is not good for you. But if there is enough good content and material which is curated and available in the context of the learner, they will gravitate towards that. But we all always want a little bit of entertainment, and we need that, right? And to fight the battle of what could go wrong has to be dealt with from a regulation point of view and from an awareness point of view, and some habits that you have to develop within households of control, which is mostly any adult of a teenager will tell you is a losing battle, but it's necessary. It's necessary to see it for what it is. Too much of it is not good for you. That much, yes, we all know. How do we develop habits to kind of reject some of that? But to me, is how it creates more safe spaces, and how can we curate more safe spaces leveraging technology. So Deepika, I'll just do a follow-on this. So when we talk about creating curated spaces with, let's say, access limited to a certain kind of content, versus when we look at, let's say, a YouTube kind of a platform, where you have access to unlimited number of creators, unlimited kind of a content. The challenge that organizations have come across is that making curated content not necessarily results into the most easily learnable content becoming available. Whereas when you have, let's say, public at large who are creating content, there are different thoughts, different ideas with which people create content, and you never know what clicks with the audience better. So, that's also one challenge that comes with curated versus public infrastructure available. In your opinions, should we, let's say, still root for something which is a curated, walled kind of a setup, or you think that there has to be a mechanism built around public infrastructure itself that will enable better quality content and a larger variety of content being made available to kids? Without a doubt, leveraging public infrastructure for better quality of content to be made for children. And we have that in India. With the availability of digital public infrastructure for education across languages, enabling that either through singular platforms or building blocks that enable it across platforms. We definitely have that. I think diversity, more is good, more is better. And particularly for India, diversity, contextualization, like you correctly said, you don't know what clicks. One method of seeing one video makes sense for like 2 children in the class, and the remaining want something else. And you just don't know what clicks. I would say without a doubt that, and we have the ability to make that happen very quickly. The only comment I had made in the context of walled garden, and particularly perhaps in the context of younger children, there's a space of not creating a wall, but creating the frameworks that all of us adhere to as an ecosystem that are creating for this. So that sort of, yeah. I think, the point that Deepika was making here was something that for us also was a big point of contention, right? If we have an app-like experience where that the primary user is only going to be a child, there are a lot of benefits to doing that. But specifically, the reason why we took that call is, on that poll that came up, I was probably one of the few people who said no. But again, I will caveat that is specifically for early learning. I use YouTube heavily to upskill myself even today, right? Everybody understands that. But I think particularly from the perspective of at least 0 to 8 years, right? YouTube is a rabbit hole. Even if you're looking at YouTube Kids, the algorithm does not always curate things the right way. It's optimized for engagement. It's not optimized for learning outcomes. And I think that is very important to keep in mind. And so
even if you're talking about curation and a walled garden, right? While the approach that we've taken is because we started out as artists, we wanted to create art. And so we've looked at how we can bring in different art styles and do that on our own. But there are lots of folks who are sourcing content from the right places, like a read along, for example, who we partner with as well, Google's Read Along. Fantastic resource that has aggregated a lot of different content. And I think among reading products that are used massively, I think they're one among the bigger products that you would see in India, at least, right? The other challenge, I think, is in terms of resource availability itself. When it comes to something like early learning, while there are a lot of resources, India is unique. In terms of policy, we have lagged behind from an early learning perspective, from an FLN perspective, compared to many other markets. And so if you want to create something that is really strong, really well thought through, at least for this space, it makes sense to have something that I wouldn't limit it to just a small walled garden, but you have a community of really similar, sort of mindset, strong-willed people who want to make a difference in this space. And I think the more we see folks like this, the better outcomes we will continue to see. So, भरत, एक बस इसी पे follow on और यहाँ पे walled curated content में, given that your team has worked extensively on that content, आपको सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ पर लगा? Let's say for example, arithmetic सिखानी है, 2 + 2 = 4, क्या वो आसानी से सिखाया जा सकता है versus कि साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए, साफ सफाई क्यों ज़रूरी है, क्यों आसपास में जो लोग हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, राइट? ये हैबिट फॉर्मिंग जो है, वो हैबिट फॉर्मिंग मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हो, क्यूरेटेड कंटेंट जो है वो क्लासरूम मटेरियल पे हो, इज देयर एनी व्यू ऑन दैट यू वुड हैव हैड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? सो आई थिंक अगर आप एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो it's very important that you don't instruct. And I think when we started out, we made that mistake that, we are creating learning content. So it was very instructional in the sense that, like you said, 2 + 2 = 4, and children ran away. So in our initial test, we realized that it has to be something where they see the characters that are there, like a Doraemon or a Shinchan that you saw. In our case, it's Kutu and Ki. They have to identify with Kutu and Ki as friends, as sathis. Once that happens, then you can do a lot of different interesting things with your storytelling format. And wahan pe storytelling plays a really, really important role. Again, if you're teaching children about hygiene, you shouldn't tell them, do this, do this, do this. You should do it in the form of a story where there are different scenarios that are playing out, and that sort of then makes a difference, right? And what we've also seen is when a parent, especially for really young children, 3, 4, 5, when they are watching it together and they are involved in the process, it becomes a lot more fun. And also something that we've seen, a child learns much faster. I'll take a couple of examples. In our second year of operations, just after we had launched the app, about a year after that, we hadn't really built a program for special needs children as such. Okay. But what was very interesting is we had a lot of parents whose children were on the spectrum, or who had just got diagnosed, or who had a speech delay. And for a lot of them, the first words that they were confident enough to speak, even within their own family sort of setting, happened because they were able to forge a bond with the content. So how you create the content, how responsibly you create the content, and with what intent you create it makes a big difference. But beyond anything, to just circle back, if a parent is not involved, none of it matters. In many cases, especially in the early years, right? So making sure that parents are involved in some way, or caregivers are involved in some way, to not just say that, this is the platform that I've created, this is the data that I see, and I know that I started with this baseline and it's here. That also has to be validated by a parent. That also has to be something where a parent is co-opted into the journey. And if you do that, then you see tremendous results. Content का impact तो I think we would have seen even in our childhood. For example, I still remember वो पंचतंत्र की जो कहानियां होती थी, at least in my childhood, वो बड़ी आराम से available होती थी, आप access करते थे. I still remember वो एक बहादुर करके एक character था,
the same publishing house which did चाचा चौधरी and Phantom, वो publish करते थे। वो मतलब बहादुर देख करके ऐसा लगता था कि कल ही चले जाओ और वो या तो आर्मी में चले जाओ या स्पाई बन जाओ, देश के लिए कुछ कर डालो वहां पे। मतलब वो एक फीलिंग जरूर जनरेट किया करता था वो कंटेंट। तो जो पावर है स्टोरी टेलिंग की, आई थिंक दैट हैज बीन विजिबल, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेचर ऑफ कंटेंट जरूर चेंज होता जा रहा है, नेचर ऑफ स्टोरी टेलिंग चेंज होती चली जा रही है। अब किसी को वो फैंटम चाचा चौधरी अब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बच्चों वाली चीजें, मतलब बच्चों को भी लगता है कि बच्चों वाली चीजें हैं वहां पे। और ये नए वाले मीडियम आ गए, बट यू आर डेड राइट कि अगर स्टोरी टेलिंग अच्छी है, it just hits the kids mind and it just stays with them forever। ये तो बिल्कुल क्लियर है। इनफैक्ट दर्शना जी, आप भी इस बारे में अपने बच्चों के साथ में जो देखा, ऐसे क्या चीजें आपको लगती हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों के लिए कुछ भी बना रहे हैं, उनको क्या चीजों में और इम्प्रूवमेंट लेकर के आना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पे, उनकी लर्निंग पे फर्क पड़ सके? मतलब जो हुआ, जो अच्छा चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, क्या चीज और बेहतर कर सकते हैं हम लोग? अभी तो थोड़े मतलब अभी हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ना बड़े बच्चों की बात करूंगी। तो जब बुक में से पढ़ रहे होते हैं ना, काफी सारे ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो कि मैं मतलब मुझे हिंदी में काफी चीजें समझ आती हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो नहीं समझ आती। और इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड ऐसे निकल के आ जाते हैं स्टोरी रीड करते हुए कि वहीं पर रुक जाता है बच्चा। अब उसको अगर वो सर्च भी करता है गूगल पर या कहीं से भी सर्च करता है, तो उसका मीनिंग कई चीजें निकल के आ जाती हैं। बहुत सारे शब्दों की तो समझ आ जाती है, लेकिन बहुत सारे शब्द में ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी में भी काफी चीजें समझने में मुश्किल है, और इंग्लिश में तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ अलग सा कुछ बनाना है तो मुझे लगता है कि जो वर्ड दिया गया है उस बुक में, कुछ एक ऐसा वर्ड जिसकी वजह से बच्चा रुक रहा है, उसी की वजह से परेशान हो रहा है, नहीं समझ, क्योंकि बीच में से अगर एक वर्ड गायब हो जाएगा, वो नहीं समझ आएगा, तो पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर रही होगी। तो जो वर्ड का मीनिंग गूगल से निकाल लेते, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको एक आसान भाषा में बता पाए, चाहे पूरे सेंटेंस के जरिए बताएं। ये नहीं है कि एक वर्ड है उसका इंग्लिश में बता दिया या हिंदी इंग्लिश का हिंदी में बता दिया, लेकिन नहीं समझ आ रहा, ना इंग्लिश में समझ आ रहा ना हिंदी में। उस वर्ड को शायद एक वाक्य में समझना होगा। मुझे लगता है एक वो जो वर्ड होगा ना, वो पूरे वाक्य में समझाया जाएगा, तभी वो समझ में आएगा कि वो वर्ड है क्या। अगर कुछ ऐसी अगर नया चीजें आए तो ऐसा कुछ आए, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ हद तक मैं बता देती हूँ हिंदी में, अगर उनको इंग्लिश में करना होता है तो फिर वो सर्च करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। अभी एग्जाम चल रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं ना बच्चे, तो मैं इसीलिए मैंने ये शेयर किया। बहुत दिक्कत हो रही है उन्हें। नहीं, और आपकी बात काफी सही है। अगेन, अपने बच्चों के साथ में ये बड़ा कॉमनली देखते हैं कि उन्होंने पूछा जी इसका क्या मतलब है। अब वो पूछा, उसका सीधा सीधा जो जवाब है वो उनको नहीं समझ में आता है। फिर उनको पूरी कॉन्टेक्स्ट बताओ कि अच्छा अगर ऐसा सा एनवायरनमेंट है तो इसका ये मायने होता है, ये एग्जाम्पल है। जब एग्जाम्पल के साथ में बताओ, वो फिर उनके दिमाग में रजिस्टर कर जाता है। और थैंकफुली ये जितना भी जनरेटिव एआई को लेकर के अभी हो हल्ला हो रहा है, एटलीस्ट उसमें एक चीज बहुत काम की है कि कोई जना अगर एक सवाल पूछता है तो उसका आंसर उसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए बता पाना, कर पाना, वो अब धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है। इनफैक्ट आई डोंट नो भरत, यू माइट हैव सीन, और दीपिका यू माइट हैव सीन the Khan Academy, the AI tool that they've built. Correct. It is actually working beautifully well for a teacher. I'll not say it is for a student, but a teacher is essentially able to ask questions like, tell me a few examples which I can quote for explaining this particular concept to the students in my school. It gives you certain results, and you say, look, this looks more complex, can you give simpler examples? So in fact,
the tool is able to assist teachers in also figuring out how can I explain a particular concept to a kid. तो वो ये वाले जो tools हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा और mature होते चले जाएंगे अगले 2-3 सालों के अंदर में, इस बात का तो फायदा जरूर मिल जाएगा कि किसको किसकी तरीके से समझाना है वो समझाया जा सकता है। जैसे आपने बोला कि साहब ये बच्चा है, इतनी उम्र का है, ये साहब लखनऊ में रहते हैं, या ये साहब चेन्नई में रहते हैं, या ये इस गांव में रहते हैं, वो एग्जाम्पल्स उनके हिसाब से निकाल करके बता देंगे। तो ये चीज के ऊपर पे वी विल सी सिग्निफिकेंट चेंजेस कमिंग इन, तो शायद आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए बच्चों के लिए। बट क्या कोई और इसके अलावा भी कोई और ऐसा एरिया जिस पे आप चाहेंगे कि हम लोग सब काम करें, ताकि जो भी बच्चों की लर्निंग पे टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ सकता है वो और बेहतर हो पाए? मेरी बेटी है ना, वो बहुत शिकायत करती है कि आज मम्मी स्कूल में ये हुआ, मैंने कुछ पूछा तो नहीं बताया, या मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं उसको बोलने के लिए। तो मैं बोलती हूँ मैं जाऊंगी, बात करूंगी, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ जाती है कि मम्मी ऐसे हुआ ऐसे हुआ, काफी चीजें बोलती है। मैंने कहा तू बता, मतलब तू क्या करेगी मतलब क्या करना चाहिए, कि मैं तो मतलब एक ऐसा ऐसा चीज हो, ऐसा रोबोट हो कि हर क्लास में जाए कि क्या क्या हो रहा है। मतलब उसने मुझे ऐसे बोला कि आपको भी पता चलेगा कि मैं जो बोलती हूँ वो झूठ नहीं बोलती हूँ। तो ऐसा एक रोबोट होगा, हर क्लास में देख रहा होगा बच्चा क्या कर रहा है और टीचर क्या कर रही है और क्या समझा रहा हो, सारी चीजें उसमें ना एक उसमें आ जाएंगी। तो आप सबको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए कि क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में माता पिता का और टीचर दोनों का ही साथ बहुत जरूरी है, और कम्युनिटी का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक सवाल पूछूं, जी, पिता जी। का कोई भी रोल है इसमें? हाँ जी, पिता का कोई भी रोल है इस प्रोसेस में? सॉरी अभी अभी कोई फिलहाल रोल नहीं है, वो बस आते हैं, थोड़ा मतलब मेरे को हेल्प करते हैं और फिर वो सो जाते हैं। नहीं, हम लोग भी उसी कैटेगरी में है, मतलब कोई रोल नहीं है हमारे घर में तो कतई भी। हम लोग पेरेंट्स की बजाय माँ बोलते हैं तो ज्यादा बेहतर है। जी, बहुत समझाती हूँ मैं उन्हें कि आप थोड़ा बाहर रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी बताने के लिए, वो बताया करो। लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि कितना जरूरी है। मैं बहुत सारे माता पिता को बोलती हूँ लेकिन अपने हस्बैंड को उस तरह से नहीं समझा पा रही हूँ। तो वो एक प्रॉब्लम है मेरे लिए भी। दूसरे पेरेंट को मैं समझा देती हूँ लेकिन अपने हस्बैंड को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए ऐप जरूर बनवा दे कुछ, हाँ, कोई तरीका हो तो। बिल्कुल तो काम अच्छा होगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा चीज रखी, ये होना चाहिए। और दूसरी चीज मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना माता पिता को नहीं पता कि उनका समय बच्चे के लिए मतलब कितना जरूरी है। कितना जरूरी है एक माता पिता का अपने बच्चे को समय देना। शायद ये चीजें पेरेंट को नहीं पता और उसकी वैल्यू भी नहीं पता। उन्हें लगता है कि हाँ हम पूरा दिन उनके साथ समय बिताते हैं। मतलब ऐसा कुछ हो कि पेरेंट को पता होना चाहिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या क्या चीजें बतानी चाहिए, कितना जरूरी है उनके साथ समय देना। क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होगी, पेरेंट को पता होगा, तभी शायद वो समझ पाएंगे। क्योंकि मैं ये शायद पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ समय देना कितना ज्यादा जरूरी होता है। मुझे बाद में पता चला कि 90% बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है 5 साल तक की उम्र में। तो ये जब मुझे पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सारी परेशानी से घिरी हुई थी, ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं जो परेशानी से घिरे हुए हैं। तो उनको कुछ मतलब ऐसे बताया जाए कि ये जो उम्र है इसमें
बच्चे के साथ रहना कितना जरूरी है, वो मतलब पेरेंट के लिए कुछ उनको अवेयर करने के लिए। Correct. And I think Deepika, Bharat, I'll have this question for both of you, in fact, and you can have different perspectives on it. But while we are looking at engaging with the kid and improving the learning of the kid through technology, all of us realize parental involvement obviously is going to be a big driver of this learning. What are the things that are being done to, let's say, educate the parents as to what is the importance of doing this bit, and what are some of these efforts that are being done or that should be done to encourage parents to have a deeper involvement with technology so that they can become carriers of this to their kids. Deepika, we'll start with you. Yeah. Actually, this is a great segue to talk about an initiative that everybody, I think a lot of people in the room are a part of. Bharat and Saja and everyone. It's, the point that Darshana ji made. कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, if I knew, अगर मुझे पता होता, if I knew, right? And an initiative that we've all sort of almost as a societal mission launched on the 5th of September is Bachpan Manao Badhte Jao. Is a message actually to say celebrate childhood and keep growing. वो जो message है वो actually parents के लिए है. बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं. अगर parents बचपन मनाएं तो बच्चे और parents दोनों बढ़ेंगे. Correct. That's core intent of that mission, and as a part of that there are 4 things that we are talking about key, and try to involve fathers. I will plug into this because of the research we did. One was, of course, the thing that Darshana ji said, the window of opportunity in the early years. You have an opportunity to engage and develop because the mind grows the fastest. We all know this, but that's the message that if she said, if I knew, I would have done differently. One is that. The second really is the point you made earlier about Brijesh, about do I focus on math or do I focus on soft skills or habits, good habits? Actually, it's about everything. Learning is about everything, holistic learning. If we can message that to parents from the early years, then it just becomes the part of the growth and development of both the child and the parent. The second thing is that. And third, this came up with a lot of research and about 250, 300 conversations with mothers and fathers across the country, where कि पढ़ाई स्कूल में होती है, घर में बच्चे हैं, but in the early years, 0 to 8 particularly, learning happens everywhere. Every living moment is a learning moment. If a parent were to engage with learning or life itself in that way, it would change that sort of dynamic. Right. And lastly, khelna, play is the way. And that is joyful for both the parents and the child. And this is where I want to plug in a research that we did with fathers, which I think the fathers panel will talk about later in the day. Ki, about over 150 conversations with fathers said one thing. Of course, time is a problem. Time nahi hai, ye nahi hai. But that moment they come home, whatever, whether it is an auto rickshaw driver, a coolie, or different families we've spoken to across the country. Ek baat jo aayi. The moment I come home, the little time that I get to play with my child is the most joyous part of my day. That is correct. I can vouch for it. Totally. That's the hook to bring the father into the conversation. But play as a means of learning and the permission to learn through play is something that National Curriculum Framework has stated, NEP has stated, we've started talking about it. All I want to say is, these are conversations that we have to have as a society. At every level. Samaj, Sarkar, Bazaar needs to talk about it as if it was like washing hands or wearing a mask. That is why, everyone's part of this mission, which we are trying to kind of get the word out, Bachpan Manao Badhte Jao. It's critical. And yeah, there's a lot of joy in this engagement, right? And lastly, I think to think of this as a journey of the parent and not the journey of the child. Too many different things come together for the
for learning outcomes and all of that, that is required, yes. But when we talk of parental engagement, can we put the parent in the center, not the child in the center? Got it. I think very valid point. Bharat, your view. So I'll talk a little bit about our experiences and how I see this sort of moving forward, right? Initially, we thought we'll keep it a little more informal, give parents an idea of what's happening with their child's usage on the app. We did see a little bit of impression here and there, but what we started noticing more and more couple of years after we had launched is about 85 to 90% of sessions were being done by children alone. And a large section of those, to go back to a point about fathers, right? 65-70% of active parents who we are engaged with are mothers. And that's probably on the lower side. I'm being a little more conservative. It's 30-35% fathers. But ultimately, whether it was mothers or fathers, what eventually led to more parental involvement is, hated doing it, but it's just something that worked. Is we have on the app, it's all fun, but we started sending report cards. They were not report cards, but we called them report cards, and that just talked about all of the learning milestones that we would like to see their child achieve, where they are in that journey, and how they can help sort of get there. But making it sound more formal made a difference. It's changed quite a bit from my time in LKG and UKG. We didn't really do much, right? Formal schooling essentially started in grade 1, and it wasn't seen as something that's a necessity, right? But if you're able to demonstrate the importance of why this age group is so critical, but also keeping in mind that you cannot be linear in your approach. While we have the curriculum framework and the NEP, which were much needed, and I think it's a fantastic document, I don't think we can take everything there and just put it in a linear approach, that in nursery we start from month 1 here, month 12 finishes here, right? Unfortunately, due to logistical constraints, you have to have some kind of a schedule, but being able to customize that journey in some way is something that technology can do. Maybe you won't be able to do that in the classroom. So that's something that we do on our app, right? Customize the journey for every child based on their interests. Now, say you want to teach a child math instead of teaching numbers. Say the child really likes planets. Teach them how to count with the planets. You want to teach them shapes. You want to get fathers involved. Get fathers to cook chapatis and teach them circles. So we have a story there. A lot of fathers wrote to us complaining, because of your story, my child wants me to cook. But that's the way you get parents involved. That leads to a conversation, right? How can you look at everyday objects to teach things like colors and shapes? Bindis, for example, or bottles, whatever is there, right? Just use everything that's around you to get a child curious. So ultimately, I think it all boils down to that. Are you able to, one, make a child curious about something, and two, keep that curiosity going and not coming down? And if you're able to do these two along with parents, then it's a win. Understood. No, thank you so much. In fact, I'll just open this up for any questions that people sitting here in the audience may have for any of the panelists here. आप में से कोई भी पूछना चाहे, please. Sorry, can we help with the mic? अच्छा, आगे. नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी बच्चे में ला रहे हैं। मैं दादा नाना मैं देखता हूँ उनको कैसे देखते हैं वो, मगर ज्यादा मेरे को पास नहीं आने देते। आप डोरेमोन देखेंगे, पढ़ाई में तो जो कोविड पीरियड में हुआ बहुत अच्छा रहा, मगर जो अब उसके बाद हो रहा है कि वो कंटेंट ऐसे देखते हैं कि जैसे रोटी खानी है तो बिना उसके नहीं देखते। और कंटेंट के अंदर जो मैंने देखा है कि सारा दिन तो वो चेयर पे बैठे हैं, तो आई साइट तो जा रही है और हेल्थ में भी इफेक्ट हो रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि उनको आधे घंटे 1 घंटे के बाद बीच में ऐसा भी होना चाहिए कि वहाँ खड़े होकर उन्होंने क्या करा, ताकि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी ठीक रहे। और कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि वो जो एक्टिविटी करते हैं फादर के साथ या खाने में, उसका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए कि उनको इनकरेजमेंट आए कि ये उस समय देखना है, रोटी खाने में या अलग चीजों में नहीं देखना। टाइम स्पेसिफाइड ज्यादा होना चाहिए।
Right. इसमें Thank you. एक चीज दीपिका ने भी जो हाईलाइट करी है वो जो खेलने की जो इम्पोर्टेंस है किसी भी बच्चे की जर्नी में, वो एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब उसका लर्निंग आउटकम पे तो जो फर्क है सो है, बट फिजिकली जैसा आप रेस भी कर रहे हैं, अभी तक स्पोर्ट्स से ज्यादा बेहतर चीज बच्चों के मतलब अर्ली डेवलपमेंट में जिसका की इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहता है, वो ये तो जरूर है। तो जो अभी इनफैक्ट इसमें बच्चों का कम और पेरेंट्स और बड़ों का रोल ज्यादा है कि जी साहब मैं बाहर पार्क में नहीं भेजूंगा, पता नहीं रोड क्रॉस करते समय बच्चों को क्या हो जाएगा। हर चीज में इतना डर हो गया है यहाँ पर ले जा करके कि हम बाहर नहीं निकालने देते बच्चों को, कोशिश ये करते हैं कि घर के अंदर में ही उनको बस फंसा करके रखें। आई थिंक वहाँ अपना भी अगर हम थोड़ा सा डर निकाल करके और टाइम लगा करके उनको खेलने की तरफ ज्यादा प्रोग्रेस करें, तो उससे भी ये काफी हद तक सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो एक रूटीन ब्रेक होता है। बच्चों से मिलते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा उस माहौल से निकलते भी हैं, तो बहुत फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से उसका इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव होता है वहां पर। दीपिका, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस हियर? I think उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि खेल एंड प्ले हैज टू बिकम पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ, कि बच्चे खेल से ही सीखते हैं। अगर हम अडल्ट उसे उसको समझें, हम उसे फैसिलिटेट करते हैं। ओके, हमने सीखा है स्कूल में जाके एग्जाम लिख के मार्क्स लेना है, हमने सीखा ना, तो वो तो फैसिलिटेट कर ही रहे हैं ना। जस्ट लाइक दैट, if we think of play, and play is everything, right? It's not just sport, it's about every action of the early years child is play. कि खेल खेल में अकेले बैठ के करते हैं, सैंड से करते हैं, क्ले से करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो आपने कहा। एंड जेंटलमैन्स क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड क्वेश्चन। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए तो सब कुछ होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन गिविंग पेरेंट्स आइडियाज फॉर प्ले, बट प्ले, just go out and play. But I say कुर्सी पे बैठे आधे घंटे में उनको एक कंटेंट दे दो। मैं आपको छोटा सा कंटेंट करके देता हूँ। एक कंटेंट है, जब एक बच्चा 6-7 महीने में ऐसे खड़ा हो चलता है, दिस इज द एरिया। ये जो है ये मिसिंग, तो बच्चा आधे घंटे में उठ के एक बार ही कर सकता है। क्यों कर सकता है? कोई भी दुनिया का बच्चा है वो इसी तरह ही बड़ा हुआ है, और इसी में ये बच्चे का सिर झुका सबके सामने, मम्मी के सामने, मम्मी पापा जो भी उस समय इकट्ठे कर दो, आई एम ट्राइंग सर। तो ये एक्सरसाइज, हाँ सजेशन समझ में आया। एक बस सवाल और लेते, क्योंकि बाकी लोग ये भी कुछ सवाल है, बस सुन लेते होगा तो फिर से आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने आप को स्पेशल मॉम कहूंगी। मेरा बच्चा स्पेशल है, स्पेशल नीड्स ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड ही इज 8+ नाउ। और जब कोविड हिट किया था तो उसका स्क्रीन टाइम मतलब उससे पहले ही खत्म करा दिया गया था, स्क्रीन टाइम नहीं था उसका। तो वो क्लास नर्सरी में था जब उसके कोविड आया, तो वो बिल्कुल भी नहीं देखता है। उसने कभी कोई ऑनलाइन क्लास ली नहीं, जैसे हम उसको बिठाते थे वो उसको बंद कर देता था लैपटॉप को। तो टेक्नोलॉजी उसकी ग्रोथ में कहीं कोई रोल प्ले कर नहीं रही, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहता उसको। और उसने ऑनलाइन क्लासेस कभी ली नहीं। अभी वो सिर्फ जो पसंद करता है राइम्स देखना पसंद करता है, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। और कुछ कार्टून्स जो हम चाहते हैं कि वो देखे, कि डोरेमोन है या पेपा पिग है, वो उसमें कुछ मैसेजेस आते हैं, उनको भी वो थोड़ा बहुत देर देखता है, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। उसके लिए सारी एक्टिविटीज फिजिकल रहती हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, या उसको किसी हम स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं, या ABAs वगैरह कर रहे हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है? So in cases where we've seen children on the spectrum not responding visually, audio has worked really well. आप जो rhymes के बारे में बात कर रहे हैं, we've got a section where we started putting that together specifically for this need, but then we saw that it was being used by others as well. एक और चीज होती है, you have to create content that is different. It has to be less stimulating. It cannot be that distracting, and you would know more as a parent than I know, ma'am. So that is something that we have seen works well. But also, I think, to sort of go back to sir's question, and I think it's linked to that. One is screen time. Whatever screen time is there, even on the Kutuki app, we recommend
not more than 30 minutes a day, maximum 45 minutes to 1 hour. We have parents who go much longer than that, but if you're able to restrict it and make it meaningful, then there are use cases which will work. But the second thing is also to, if you want to, one, work with the child and also with the parent, to use this as a means to give ideas for what you can do outside. Unfortunately, what we see more and more of is everyone's lives are very busy. So parents ka bhi, they want that half an hour of that free mind space, 45 minutes of free mind space, to phone dete. But if you do it with intent, and agar aap jo bhi content use kare, even for your own, if it helps, then that is something that you can take outside as well. But would love to have a chat, ma'am, to understand how your experience also has been. But does audio work as a medium? Yeah, Or audio works. His speech is also delayed, so you can say that he is non-verbal. So we are using some means so that he can answer or communicate with us, but he is non-verbal. He's saying few words. It's in sounds only. does he enjoy kinesthetic activities, more fine motor yeah. skills? He enjoys all these activities, and actually, I enrolled him in. But so when we see that teachers also now, they doesn't want to push special child because it needs more energy. So then we withdraw, because he was going into the skating and I was going with him every day, and I don't know how to skate. So how I'll help him? So, and he likes water. Now we are thinking of swimming, but we need to find a good teacher who wants to teach the special child, because it will take. एक लास्ट क्वेश्चन एक और किसी का अगर है तो हाँ प्लीज. Thank you. I'm Jagrati. I've worked in space of education, and it's a generic thing. We all are looking at technology as one of the so omnipresent and so overpowering. But what's happening also is that when it comes to children, is that it is disconnecting the child from the the external environment, and it's happening in general, the social distancing and most particularly post COVID. And I was talking to one of the kid, and he said, and he was studying in one of the private schools, one of the best private schools. He said that he couldn't, they all had a slow, slow body language when connecting to the teacher when came back to the school, and therefore they had so much of difficulty to connect to the real teacher there out there, physically out there. So the point here I'm trying to focus is the how, Kudukin particularly, how are you focusing on the connection part of it? And very rightly said, the up to 8 years, these things of connecting to others, social connections and all are established. And so how do you kind of take in cognizance all these factors? Thank you. Ma'am, I think one thing that for us is very important from a self-recognition perspective is that we are not a complete solution. We are just one of the tools that are required. And we try and make sure that that is also put across to parents, that, if we see someone is using it a lot, send them, great job. There's a lot of things that your child has watched and completed, but this is how much screen time we recommend, and we have limits that you can set. So I think being disciplined about that is very important from a parent's perspective. But beyond that, when it comes to going out and playing with other children, how you can do that is with storytelling again. You have a story where, how many children do we see in today's cities playing in the mud? I did it all the time. I got scolded all the time. I don't see too many children doing that. Encourage them to go out, play in the park. Have stories where they're incentivized to do that. So we've created games where they have to go and do activities in the park, like mock climber tree, etc. But then we also say this is so much fun in the real world. So why don't you go and do that, right? Maybe one of the things we could do is from a community-generated content perspective. And this is something we thought, but wanted to implement it earlier this year, but still trying to figure out the privacy concerns around it, where we encourage parents to share things that they're doing with their children like this, where you can go out in the real world, communicate and say, this is a Kutuki story I saw, or this is something I saw on YouTube, something I saw on any platform, but I'm able to translate that to the real world. So that is a challenge. It's not like we have addressed it completely, but it's something that we are actively looking at all the time. ठीक है मैम, सॉरी मैम, एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हैं प्लीज.
This we'll just take this as the last question because we are already overrunning the This time. would be a question then, Please. so that we don't exceed the time limit. At times I feel that because we are different kinds of stakeholders in this ecosystem, somebody has built an app, Saja is working in the community, and we have our own narratives to also push that, this is somehow a complete solution to all your problems. Somewhere there's a need in the community to engage with parents about the holistic development of a child for a particular age group, and then say, okay, we exist for this problem that you might face. And for instance, I was just thinking and suddenly I felt that, when we were kids, and as you were also saying that you played a lot in the mud, and we used to, in our community, दोपहर भर खेलते थे और कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और अभी उसी कम्युनिटी से 2 बच्चे किडनैप हुए रिसेंटली, तो अब पेरेंट्स नहीं भेजेंगे वहां पर बाहर. Until unless you are in a gated community, you are a well-off person, you don't have spaces in the community to play anymore. So probably through the app or through Saja's contribution, can there be some kind of parental groups in a same community where some parents take the responsibility of taking 3-4 children to a common space to play, and could they be facilitated with interesting structured play with conversations, so that parents are supported in playing games that are much more meaningful for the children. So for instance, a lot of technology engagement for a younger age is very passive otherwise. I mean, even if you're teaching, early number sense, you have to talk to the children about picking up stuff. And it's not just about counting, it's about every learning outcome that you talk about. Of course, listening and speaking, reading and writing has to be taught in a very structured manner. It's not like listening and speaking that you could do using an app. It would require much more gamification. If it is on platform, it would require much more engagement with the paper, pencil, cards, blocks, everything, if you want to teach them. So no one solution, but I think one space where there are a lot of work that is needed is helping parents build a community of supportive parents. हर एक पेरेंट के पास इतना टाइम नहीं है. ऑटो वाले, रिक्शा वाले भैया के पास, काम करने वाली कामगार महिलाओं के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रक्चर टाइम बनाए. वन इज दैट कि सारे पेरेंट्स में से रोज एक व्यक्ति अगर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से काम कर सके एक दूसरे के साथ. दूसरा, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका ये बन सके कि हमारे ऐप पे बच्चे आधा घंटा तो खेल ही रहे हैं, या ये इस प्लेटफॉर्म से खेल ही रहे हैं, लेकिन हफ्ते में ये वाला दिन जो है पार्क का है, ये वाला दिन मिट्टी का खेलने का है, ये वाला दिन घर के बर्तनों से खेलने का है. सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चरिंग सो दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन प्रोबेबली कुड बी एन आंसर. थैंक यू. हाँ, मेरे ख्याल से ये सब चीजें करने के लिए ना, जो हम लोग पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट हम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं. हम लोग को थोड़ा सा बच्चा बन जाएंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा. जो हम लोगों के बच्चे के दादा दादी नाना नानी है ना, वो ज्यादा बेहतर है हम लोगों से. They are able to connect with kids much better. But thank you everyone. Thank you so much for your time. Thank you Deepika, Bharat, Darshana जी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. Thank you very much. Thank you so much, Bharat ji, Darshana ji, Deepika ji, and of course, Brijesh ji for moderating the panel so beautifully. इसको थोड़ा सम अप करना चाहूंगी, जो इस पूरे डिस्कशन को, जो काफी इंसाइटफुल रहा है, कि कैसे टेक्नोलॉजी ने कोविड के समय में पेरेंट्स के लिए एक ऐसा माहौल और ऐसा समय बनाया जिससे वो समझ पाए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्टिव होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इस तरीके की सिचुएशन में वो कैसे बेहतर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को. पेरेंट्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जैक्टली वेयर दे कैन सपोर्ट एंड हाउ दे कैन सपोर्ट their children. This also, technology has also given the opportunity to the institutions and organizations who are dedicatedly working towards child learning. It gave them the opportunity to understand the challenges of children, that where exactly they need to come forward or work towards. Technology has unlocked n number of opportunities for creators, for schools, for parents, जिससे वो अपनी चाइल्ड लर्निंग की जर्नी में बेहतर तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें. But we also got to see that there are still challenges existing for children and for everyone who is involved in enhancing child learning. So
फॉर इंस्टेंस जैसे कि डिस्कशन से निकल के आया कि अभी भी कहीं ना कहीं शायद टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी जो एक रियल जो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, जो फियर हैं बच्चों के, वो अभी भी हमको शायद एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन और इन अ ग्रुप सेटिंग। तो वो शायद अभी भी हम देख सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं उसको। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट is a crucial aspect when it comes to child learning. Parents, like Darshana ji shared, कि पेरेंट्स रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन या इन्वॉल्वमेंट बच्चों की लर्निंग में कितना ज्यादा है। वी डेफिनेटली आर टुगेदर कमिंग एज अ कलेक्टिव, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस गैप को कम किया जा सके। एंड ऑल्सो आई थिंक भरत जी वो सेइंग कि हमें एज अ कम्युनिटी के तौर पे काम करना होगा, हम कर रहे हैं, पर शायद इस तरीके को और मजबूत बनाना होगा जहाँ पे हम सब इकट्ठे आके चाइल्ड लर्निंग को टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्रूव कर सकें और बेहतर और स्ट्रेंथन कर सकें। आई थिंक थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द पैनलिस्ट। आई रिक्वेस्ट लता जी कि वो आए और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको एक छोटा सा प्रेजेंट टोकन ऑफ लव के तौर पे शेयर कर सकें। जी का हम ले जाते। थैंक यू सो मच भरत जी, थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू दीपिका मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम, थैंक यू so much guys. Before we break in for lunch, I would like to introduce or talk about a little about few organizations that I missed during the introduction part. We also have organization Top Parent, PI और टेक्नोलॉजी में वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए काम करते हैं पेरेंट इन्वॉल्वमेंट को लेकर। वी हैव बचपन बनाओ बढ़ते जाओ फ्रॉम एक स्टेप, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं और पीआई और टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। वी हैव ऑर्गेनाइजेशन दोस्त, जो कि 0 से 6 साल के बच्चों के साथ अर्ली चाइल्डहुड के अराउंड उनकी नीड्स के आधार पर कंटेंट डेवलप करने का काम करता है। सो थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट विद अस टुडे, एंड आई वुड इसी के साथ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू take a break, have lunch, and also please I request everyone कि हमारे यहाँ stalls हैं, तो अगर आप को चांस लग रहा है, आपको इंटरेस्ट किसी भी स्टॉल पे ज्यादा लग रहा है, तो प्लीज स्पेंड सम टाइम। I request to spend time on all these stalls that we have arranged for you. Thank you everyone. We will break here, but right after this break we have a special segment जहां पर हमने कुछ और स्पेशल गेस्ट हमको ज्वाइन कर रहे होंगे और हम उनको सुन रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन। टेबल्स खुले रहेंगे, आप लोग विजिट कर सकते हैं। जो लंच करना चाहे वो पीछे लंच के लिए ओपन है। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग पैनल जरूर है। हमारे साथ डॉक्टर मोनी मलिका डे हैं, जो कि बच्चों की लर्निंग और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में बात करने वाले हैं, और हमारे साथ अमित सेन भी जुड़ेंगे जो कि इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लंच के बाद मुझे थोड़े ज्यादा लोग दिखेंगे, थोड़े कम नहीं। थैंक यू। सबको नहीं करना।